નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 6ની જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 આવી રહી છે તેના દરેક વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના અધ્યયન નિષ્પત્તિ મુજબના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ માત્ર ને માત્ર ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ ઉપર ઉપલબ્ધ થઈ ચૂક્યા છે। તો જરીક પણ રાહ જોયા વિના આ જે પ્રશ્નપત્ર અને તેના સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ મંગાવી લેજો, કારણ કે તમને પરીક્ષાની તૈયારી માટે, પરીક્ષામાં સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે, શિક્ષક છો તો વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થવાના છે। ચાલો દોસ્તો, તો જોઈએ આપણે જિલ્લા અથવા નગર શિક્ષણ સમિતિનું પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2025નું ધોરણ 6નું હિન્દી વિષયનું તારીખ 9-10-2025ને ગુરુવારના રોજ જે 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર લેવાવાનું છે તેનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 5 જેના કુલ 10 માર્ક્સ છે। पहलो सवाल, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो उत्तर, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बीजो सवाल, प्रकृति के तत्वों की सूची बनाइए। तो उत्तर, प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा, अग्नि और पानी है। तीजो सवाल, एक जगत एक लोक, इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। चौथों, आप किस तरह धरती को महकाना चाहोगे? उत्तर, पेड़ पौधे लगाकर और सफाई रखकर धरती को महकाना चाहूँगा। पांचवों, सूरज की किरणें जगत को कैसे चमकाती है? उत्तर, सूरज की किरणें अंधकार दूर कर उजाला फैलाकर जगत को चमकाती है। छठो सवाल, जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ એના પહેલાં તમારા માટે ખાસ મહત્ત્વની સૂચના છે કે ધોરણ 3થી 8ની જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025 આવી રહી છે તેના માટે ખાસ ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન આપણે તૈયાર કરેલા છે। એ પણ તમારી અધ્યયન નિષ્પત્તિ અને તમારી બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણે રેડી ટુ પ્રિન્ટ ફોર્મની અંદર તમને મળી જવાના છે અને તમારી પ્રશ્નપત્ર જે છે તમારી શાળાના નામ સાથે પણ તમે મેળવી શકશો। તો આવા જે પ્રશ્નપત્ર છે એ પરીક્ષામાં સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે, પરીક્ષાની સારામાં સારી તૈયારી કરવા માટે, જો તમે શિક્ષક મિત્રો છો તો વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા લેવા માટે ને એ પણ તમારી શાળાના નામ સાથે તમને ઉપલબ્ધ થઈ જવાના છે। એક વિષયની કિંમત માત્ર ને માત્ર 60 રૂપિયા છે। 70 46 22 22 54 અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે। આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી, સંપર્ક કરી અને તમે આ પ્રશ્નપત્ર અને પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારા વોટ્સઅપ પર મંગાવી શકો છો। તો મિત્રો, આજે જ મંગાવી લેજો, પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ એટલે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 1B, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 2 જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે। पहलू, हमारे देश में कौन कौन से धर्म है? उत्तर, हमारे देश में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म है। बीजू, फूल से आप अपने जीवन में क्या सीख लेंगे? उत्तर, मैं फूल से यह सीख लूँगा कि जैसे फूल अपनी सुगंध और सुंदरता से सबका जीवन महकता है, वैसे ही हमें भी अपने अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों से लोगों का जीवन सुखद बनाना चाहिए। तीजू, हम जग में नाम कैसे कमा सकते हैं? उत्तर, हम मेहनत, ईमानदारी, अच्छे संस्कार और दूसरों की सेवा करके जग में अपना नाम कमा सकते हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2A, સહી વાક્यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે। પહેલું, જંગલ टहल में हिरनी रही थी। तो અહીંયા વાક્ય બનશે जंगल में हिरनी टहल रही थी। બીજું, बतख स्वभाव था नन्ही का कैसा? तो नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2B, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। પહેલું, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? उत्तर, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू डंक मारता था। बीजू, 51 के बाद कौन सा अंक आता है? उत्तर, 51 के बाद 52 आता है। तीजू, 5 साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई थी? उत्तर, 5 साल की उम्र में रेशमा को पोलियो की बीमारी हुई थी। चौथो सवाल, राजा भोज एक निर्दयी राजा थे, सही या गलत? तो जवाब आवशे राजा भोज एक निर्दयी राजा थे, गलत। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2C, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 3 જેના कुल 6 मार्क्स है। पहला सवाल, खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, सूची लिखिए। उत्तर, खेती के लिए हल, ट्रैक्टर, बीज, पानी, खाद, कीटनाशक, बैल, दरांती, नांगर आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। बीजू, दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती है? उत्तर, दीपावली पर हमारे घर में लड्डू, बर्फी, जलेबी, चकली, गुंजिया, शक्करपारा आदि मिठाइयाँ बनती है। त्रीजू, नन्ही ने जो किया वह सही था या गलत, क्यों?
तो उत्तर, नन्ही ने जो किया वह सही था, क्योंकि उसने बिच्छू को बचाकर करुणा दिखाई। उसने जीवों पर दया करना सीखा और दूसरों की जान बचाना एक अच्छा काम है। चौथों, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, हमें पशु पक्षी के प्रति दया, प्रेम और संरक्षण का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए किन्हीं तीन, जेना कुल 6 मार्क्स है। पहलू, मन डोलना, तो किसी निर्णय में अस्थिर होना या मन बदलना। वाक्य, परीक्षा के समय उसका मन डोलने लगा कि कौन सा प्रश्न पहले हल करे। बीजू है वचन देना, किसी से वादा करना। तो वाक्य आवश्य, पिता ने बेटे को पढ़ाई में मदद करने का वचन दिया। त्रीजू है हाथ बटाना, तो यहाँ आवश्य काम में मदद करना। वाक्य, माँ के रसोई के काम में मैंने भी हाथ बटाया। पीठ थपथपाना, यानी कि प्रशंसा करना या हौसला बढ़ाना। वाक्य, अच्छे अंक लाने पर शिक्षक ने मेरी पीठ थपथपाई। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए किन्हीं एक, જેના કુલ 8 માર્ક્સ છે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાની આપણને ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે। આ ચિત્ર જે છે એના ઉપરથી આપણે કહાની લખવાની છે। તો જુઓ, जंगल में एक सिंह रहता था, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे। सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। सभी जानवरों ने इकट्ठे होकर सिंह से कहा कि वे रोज एक जानवर भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने समझदारी से काम लिया। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक दूसरा सिंह मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। सिंह भड़क उठा। उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस तरह बुद्धिमानी से खरगोश ने अपनी जान बचाई। तेना अथवामां आपणे अहींया एक वार्ता आपवामां आवेली छे। तमे जोई शको छो एक चित्र आपवामां आवेलुं छे, चरवाहा और बाघनी वार्ता। तो ए वार्ता पण अहींया आपणे आपेली छे, तमे जोई शको छो। मित्रों, आ वार्ता पण अहींया आपणे खूब ज सरस रीते रजू करी छे। तमे विडियो स्टॉप करीने अथवा तो पॉज करीने जोई शको छो, अथवा तो समग्र सोल्यूशननी पीडीएफ जे छे ए आपणे एप्लिकेशन पर मुकाई चूकी छे, अथवा तो अहींया नंबर आपेलो छे 70 46 22 22 54। आ नंबर पर कॉन्टेक्ट करीने पण तमे मेळवी शको छो। प्रश्न नंबर 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनमें निहित भावों और विचारों को लिखिए किन्हीं एक, जेना कुल 6 मार्क्स। पहलू, राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के बहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। तो एमा आ प्रमाणे आवशे, इन पंक्तियों में सभी राष्ट्रों में एकता, प्रगति, न्याय, मानवता और धर्म का पालन करने का संदेश है। इसमें विश्व शांति का सपना है। सारी दुनिया एक लोग एक परिवार की तरह रहे, सब लोग मिलकर रहे और भाईचारा बढ़ाए। चलो त्यार पछी आपने बीजी पंक्ति आपेली है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। तो उत्तर, इन पंक्तियों में अच्छा इंसान बनने, अच्छे और सच्चे काम करके जग में नाम कमाने का संदेश है। हमें धरती को महकाने यानी अपने अच्छे कार्यों से संसार को सुंदर, खुशहाल और सुखद बनाने की प्रेरणा दी गई है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए किन्हीं एक, जेना कुल 6 मार्क्स है। तो मित्रों, अहींया तमे जोई शको छो एक सरस मजानो आपणे हिंदीमां पेरेग्राफ आपेलो छे। आ पेरेग्राफनो आपणे गुजराती करवानो छे। तो अहींया तमे जोई शको छो आ पेरेग्राफनो खूब सरस रीते आपणे गुजराती करीने पण दर्शावेलुं छे। तमे विडियो स्टॉप करी अथवा पॉज करीने जोई शको छो। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित समानार्थी शब्दों का अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए किन्हीं 5। रक्त, तो एनु समानार्थी थशे खून। वाक्य आवशे, दुर्घटना में उसके हाथ से रक्त निकलने लगा। राह यानी कि रास्ता अथवा तो मार्ग। वाक्य आवशे, गांव जाने की राह बहुत कठिन थी। ત્યાર પછી છે महक अथवा तो एनु समानार्थी थशे सुगंध अथवा खुशबू। वाक्य, फूलों की महक पूरे बगीचे में फैल गई। दैनिक यानी कि प्रतिदिन का, रोज का। तो वाक्य आवशे, अखबार हमारा दैनिक साथी है। तननु थशे शरीर। वाक्य आवशे, व्यायाम से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। कमजोरनु थशे दुर्बल या फिर ताकत कम होना। वाक्य, बीमारी के बाद वह बहुत कमजोर हो गया। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, નીચે दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए किन्हीं एक, જેના કુલ 7 માર્ક્સ છે। તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક સરસ મજાનું મેળાનું ચિત્ર આપણને આપેલું છે અને આ મેળાના ચિત્ર ઉપરથી આપણે સરસ મજાનું વર્ણન પણ આપણને દર્શાવેલું છે। તો તમે આ પીડીએફ મેળવી અને સમગ્ર સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી શકો છો। તેના અથવામાં એક ગામડાનું ચિત્ર અહીંયા આપણને આપેલું છે। તો એ ચિત્ર જે છે એના ઉપરથી પણ તમે અહીંયા વાક્યો જે છે આપણે ખૂબ સરસ રીતે લખેલા છે।
તમે PDF મેળવી અથવા તો વિડીયો સ્ટોપ કરી અને સમગ્ર સોલ્યુશનનો અભ્યાસ અહીંયાથી કરી શકો છો. મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન છે, પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. દરેક વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રોએ અવશ્ય આ પ્રશ્નપત્રની સોલ્યુશનની PDF મેળવી લેવી. प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए किन्हीं चार में पहलू आप क्या खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे यहाँ प्रश्न चिन्ह आवशे. माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, तो माँ ने पूछा पछी अल्प विराम, त्यार पछी अवतरण चिन्हनी अंदर आवशे. त्यार पछी त्रीजू, छी कितना गंदा पानी है, तो जोई शको छो मेरी पुस्तक का नाम रामायण है અને વાહ कितनी अच्छी किताब है. દરેકે દરેક વાક્યો જે છે તેના વિરામ ચિહ્નો આપણે દર્શાવેલા છે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो सूर्य, भूमि, प्राण અને सहसा, તો આ રીતે આવશે પ્રાણ, ભૂમિ, सहसा અને સૂર્ય. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11, નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લીખીએ. 10 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, 3 નિબંધ આવશે, 3માંથી કોઈ પણ એક તમારે લખવાનો છે. એમાં પહેલું મેરી પાઠશાલા, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેરી પાઠશાલા નિબંધ આપણે અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે દર્શાવેલો છે. તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને, પોઝ કરીને અથવા તો PDF મેળવીને તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો. બીજું છે વૃક્ષ અમારે મિત્ર, આ નિબંધ પણ આપણે અહીંયા દર્શાવેલો છે. અને ત્રીજું છે મેરા પ્રિય ખેલ. તો આ રીતે આપણે આ જે હિન્દી વિષયનું જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025નું આ જે મોસ્ટ IMP પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું મિત્રો આપણે જે હિન્દી સિવાયના દરેક વિષયના જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2025ના જે મોસ્ટ IMP પ્રશ્નપત્ર છે તેના સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે, એ પણ બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના અને અધ્યયન નિષ્પત્તિ પ્રમાણેના. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું અને સાથે સાથે એક સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં.